Supreme Court of Pakistan, Mr. Arbab Muhammad Arif, who has filed CMA number 270 of 2024. ठीक है, full stop. Next paragraph लिखे. We've heard Mr. Learned Senior Counsel Hamid Khan for the petitioner and Mr. Salahuddin Ahmed for petitioner in CP number. आपकी कौन सी है सलाउद्दीन साहब? हाँ 15 आपकी CP का नंबर क्या है? I'm sorry, my lord. What's your CP number? 15 of 2020, constitutional petition. 15 of 2020. 20. एक और भी है apparently. And two CP's number 2 and 15 of 2020. 221 की है। अच्छा 221 की अलग नंबर चेक कीजिएगा प्लीज, ठीक है? Full stop. We've also heard Mr. Learned Senior Counsel Messrs. Wasim Sajjad and Khwaja Haris, और कोई तो नहीं, यही सब हो गए. Full stop. And the Learned Attorney General for Pakistan. Full stop. Assisted by मलिक जावेद असिस्ट किया था या उन्होंने आपको असिस्ट किया? अच्छा मलिक जावेद. फुल स्टॉप. नंबर ऑफ फुल स्टॉप असिस्टेंस इसमें लिखिए लीगल लर्नड काउंसिल में सबमिट their concise statements. Precise. My lord adds precise and concise. Statements with regard, amongst others, to the following queries which arose during the hearing. Colon, फिर आप इसको 1, 2, 3, 4 कर लें. The whether an inquiry was conducted by the Supreme Judicial Council, and if not, was it a constitutional or legal requirement, and if it was, the consequences of the failure to do so. Question mark. Whether, if the consequence of doing so. Number 2 लिखें. The consequence इसमें लिखते हैं whether that since in the interregnum, that since during the pendency of CP number 76/2018, CP number so and so लिखते हैं was filed on, कौन सी तारीख को फाइल हुई थी? 76 October 2018. वो डेट ले लीजिएगा, 18 October 2018, and the petitioner attained the age of 62 years 30th of June 2021. On 30 June 2021, whether what, if any, how can the matter now be attended to if the petition is to be allowed, okay, if he is to be granted, allowed question, if he is to be granted relief, whether, including whether the matter can be remanded to the Supreme Judicial Council.
Anything else? Whether there was no need to conduct an inquiry by these SJC as the speech admittedly given by the petitioner in itself, making of the speech in itself constituted misconduct as defined in the judges, वो पूरा नाम लिख दीजिए, code of conduct. ठीक है? Anything else you want to add? Sir, in addition to response to these questions, I may kindly be allowed to give the propositions, my propositions. हमने लिखा amongst others, वो बाकी आप जो मर्जी लिखना चाहें, मगर ये चीजें अटेंड कर लें. अच्छा, full stop. हाँ, प्रेसिडेंट्स भी दे दीजिएगा, हमें लिखने की जरूरत तो नहीं है ना. Everything. ठीक है. Comprehensive. So these three you attend to, the rest whatever you want to add, we are not stopping you, but just keep it sort of more precise. Not, it shouldn't be legal drafting. It should be point to point. Thank you. Chale, thank you very much. It's been a learning experience also for us. जो ख्वाजा साहब, अच्छा हाँ, कितने within how much time to be given आपको? I think two weeks. If your lordship wants. हाँ, It's up to 3 हफ्ते दे दें. नहीं, legal issues है ना. quite right. You know, we don't want to say something ना. अब इतना वक्त गुजर गया तो 1-2 हफ्ते अगर वो हमारे खान साहब नाराज ना हो कि जी 3 हफ्ते अब दे दिया. ठीक है, खान साहब 3 हफ्ते ठीक है? 3 हफ्ते ठीक है? सर 2 हफ्ते ही काफी होंगे सर. तो ख्वाजा साहब 3 मांग रहे हैं, 3 कर लें. वैसे भी इलेक्शन वाला हफ्ता तीसरा हो जाएगा ना फिर. ठीक. हाँ, तो ये इलेक्शन के बाद ही जाएगा मेरे ख्याल में. अच्छा, इसमें लिखे कंसाइज स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विद इन 3 weeks. In case after judgment is reserved, however, in case after examining the concise statements and the available record, a further hearing is required, the court will convene. ठीक है? We don't know what you're going to say, and some of the things I have not read that were filed today and yesterday. Sure. सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज़ सदीकी के खिलाफ अपील पर समाअत जारी थी और चीफ जस्टिस की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है. आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था और जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत शामिल थे. सुप्रीम कोर्ट में साबिक DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और ISI के साबिक एहलकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामी की जानिब से उनके वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल दिए गए. शौकत अजीज़ केस में इंक्वायरी लाजिम है. वकील हामिद खान की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था. तमाम फरीक़ैन तस्लीम कर रहे हैं कि इंक्वायरी सही से नहीं हुई है. चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया और हामिद खान की जानिब से दलाइल दिए गए कि पहला केस था जहाँ जज को इंक्वायरी के बगैर हटाया गया है और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ीसा की जानिब से कहा गया कि हम ये फ़ैसला महफूज कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज़ सदीकी की बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत जारी थी और अब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ीसा की जानिब से फ़ैसला महफूज कर लिया गया है.